Good evening, everyone. As I told you, one SR topic I taught now, the second one that is the corridor. So today we are going to learn the second SR topic that is corridor. तो पहले हम जानेंगे कि ये okay. Actually, this is entire collection of some stories. The Secret Garden. It has been taken from the book Secret Garden. Okay, so it is a story here. The corridor. Okay, an abridged extract from the Secret Garden by Francis Hodgson Burnett. He is a writer, and this story one part of the entire collection of the stories that we are going to learn, the corridor. So as I told you, we must understand here why the title is given the corridor title क्यों दिया है. तो पहले उससे पहले हम कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे ये स्टोरी में कौन से कैरेक्टर है. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, who is she is Mary. Okay, here she is the Mary is the main important character of the story, is a Mary. Another one is Martha. She's the maid who helps or take care of Mary at home. Then मिस्टर क्रेवन. मिस्टर क्रेवन ये जो मैरी है उसके अंकल होते हैं. अंकल. ओके, वो अंकल है. उसके बाद मिसेस मेडलॉक एक कैरेक्टर है जो कि हाउसकीपर होती है मिस्टर क्रेवन की. वो ये स्टोरी में उनका नाम नहीं है बट शी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन. अनदर वन दैट अंकल जो थे, जो उसके अंकल मिस्टर क्रेवन ये कैसे थे. ही वॉज नॉट नॉर्मल, ही वॉज हंच बैक पर्सन. जो कुबड़ा आदमी था, उसकी पीठ पे ऊपर कुबड़ था. तो और वन मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दैट इज बेन वेदरस्टाफ. एक गार्डनर है, एक माली है उनके घर का. ये इतने कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट है. तो ये मेरी जो है वो उसका जन्म हुआ था इंडिया में. वो जन्मी थी इंडिया में. और उसके पिताजी जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ सर्वेंट ऑफिसर थे. तो वो यहाँ पे रहती थी. उसकी मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी. बट द चाइल्ड शी here, Mary, she was pale and frail girl. She was not that much. The parents, they were more concerned. They even didn't like that child. She was neglected. वो हमेशा उसको neglect करते थे. तो वो ऐसे ही दिखने में अच्छी नहीं थी. तो हमेशा से वो neglect होती गई थी. घर में अकेली अकेली रहती थी. इंडिया में भी वो अकेली अकेली रहती. तो क्या हो गया कुछ दिनों के बाद, उसकी डैडी, उसके पिताजी और उसके उसकी मम्मी दोनों भी कॉलेरा की वजह से वो मर गए. और उसका इंडिया में देखभाल करने वाला उसका कोई नहीं था. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा तय किया कि अब ये मेरी को क्या करेंगे, उसके अंकल के पास मिस्टर क्रेवन, उनके यहाँ पे मिसल थिट वेयर, जो उनका वो रहते थे मूर एट द एज ऑफ मूर, यानी रेगिस्तान के बाहर उनका एक बड़ा सा विला था. बहुत बड़ा हवेली उनकी थी, जहाँ पे 100 200 100 150 कमरे थे वो बड़े से घर में. और वहाँ पे उसके अंकल मिस्टर क्रेवन रहते थे. मिस्टर क्रेवन के पास ये लड़की को भी ब्रिटिशर्स ने भेज दिया लंदन में. अभी वो नए घर में चली गई. वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है. तो हम वो देखेंगे. नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज मेरी. मेरी शी इज एट हर अंकल्स हाउस मिस्टर क्रेबन. उनके बड़े से घर में वो है. और वो बड़ा सा घर, बहुत सारे उसमें वो रूम्स वहाँ पे थे. और रूम्स को जाने के लिए बीच में से कॉरिडोर था. तो दैट्स व्हाई द टाइटल इज गिवन टू दिस लेसन, कॉरिडोर. ओके. तो कॉरिडोर ये टाइटल क्यों दिया गया है, क्योंकि बड़े से विले में वो रहती थी. और वो घर में जाने के लिए दोनों तरफ रूम से जो रास्ता होता है उसको हम कॉरिडोर कहते हैं. तो कॉरिडोर टाइटल है. तो कॉरिडोर में क्या होता है ये हम इस स्टोरी में देखेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट आई टोल्ड यू दैट मेरी, शी इज अ गर्ल चाइल्ड एंड शी इज लिविंग एट हर अंकल्स हाउस मिस्टर क्रेवन. उसकी देखभाल करने के लिए है मार्था, जो कि मेड है उनके घर में, वो उसका देखभाल करती है. उसके अलावा बेन वेदरस्टाफ एक माली है जो उनके गार्डन में, मिस्टर क्रेवन के गार्डन में वो काम करता है. तो ये शुरू होती है स्टोरी. कैसे शुरू होती है देखेंगे. तो पहले जो ये मेरी है वो बहुत ही दुबली पतली थी. जब वो मिसल थे
में आई थी तब वो बहुत ही दुबली पतली थी। तो उसने जो ये मेड थी मार्था, मार्था ने क्या किया, उसको एक स्कीपिंग रोप दिया जो कि ये लेसन में नहीं है। स्कीपिंग रोप दिया और रोज की उसकी एक्सरसाइज होने लगी, उसका अच्छा देखभाल करने लगी, उससे अच्छी बातें करने लगी। तो उसकी हेल्थ में अभी इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, सी सी Mary's days were all the same. Every morning she woke up and watched Martha lighting the fire. As I told you, Martha, she is the maid who was taking care of Mary. और वो घर में she is lightening the fire as usually. Then she got dressed. Mary got dressed, ate her breakfast a little more each day, and went outside where the fresh air made her feel better. और वो घर में उसकी देखभाल करने के बाद वो मार्था उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। रोज का उसका डाइट बढ़ गया था खाना, और सब होने के बाद वो फ्रेश एयर में घूमने के लिए मेरी बाहर निकल गई, यानी वो हवेली के बाहर। शी लुक बेटर टू नाउ, वो पहले से अच्छी भी दिखने लगी थी। हर चिक्स हैड टर्न पिंक एंड हर आईज वर, उसकी चिक्स जो है पिंकिश हो गए थे, और उसकी आंखें भी अभी ब्राइट हो गई थी, यानी कि उसकी जो खूबसूरती तो अभी वो निखरने लगी थी मेरी। सो one place she went to more often than to any other was outside the garden. Yes. So one place when she would go outside, जहाँ पे वो हर रोज बाहर घूमने के लिए जाती थी फ्रेश एयर में, तो she would linger on one place, एक जगह पे। one place she went to more often, वो हमेशा वहां जाती थी। and other was outside the garden for long walks, और जो वहां से रास्ता था, बहुत दूर का रास्ता था, एक गार्डन के बाजू से जाता हुआ, वहां से वो हमेशा जाती थी। देयर वॉज bare flower beds on either side of it, and ivy grew thickly against the surrounding walls, with the growth more dense on the part of the wall. तो वो ऐसे रास्ते से जाती थी कि वहां पे वॉल के ऊपर आईवी, आईवी यानी कि क्रीपर क्लाइंबर। ओके, तो क्रीपर और क्लाइंबर वहां पे बहुत बढ़ गए थे, ऐसे रास्ते से वो हमेशा जाती थी। और फ्लावर बेड्स भी थे वहां से, वो जो रास्ते से वो जाती थी, तो बाजू में बहुत बड़ी दीवार थी, बहुत बड़े दीवार पे बहुत सारे आईवीज यानी कि क्रीपर क्लाइंबर बड़े हुए थे, और आजू बाजू में फ्लावर्स भी थे। It seems as if that part had been neglected for a long time. और ऐसा लगता था कि दैट पार्ट दैट शी वुड गो थ्रू, जो रास्ते से वो जाती थी, ऐसा लगता था कि वो पाथ और जो वो गार्डन का पार्ट है, जो गार्डन की वॉल है, वो कम्प्लीटली निगलेक्टेड थी। क्योंकि अदर साइड्स ऑफ द गार्डन दैट वर प्रॉपरली ट्रिम्ड, अच्छे से काटे हुए थे, घास बड़ी हुई नहीं थी, और आईवीज भी उसके ऊपर, क्रीपर क्लाइंबर्स भी नहीं थे, मगर एक साइड ही ऐसी थी, लॉन्ग साइड, जिसके ऊपर पूरी तरह से कवर्ड हो चुकी थी वॉल पूरे क्रीपर क्लाइंबर से, एंड नॉट ट्रिम्ड इवन। It seems as if that part had been neglected for a long time. Neglected means not taken care, long time. The rest of it had been clipped. The rest part of that garden had been clipped means अच्छे तरीके से उसको काटा था, अच्छी तरह से लटकाया था, and made it look neat other part. But this part at the lower end of her walk had not been trimmed at all. Trimmed means cut, गिविंग प्रॉपर कट। और जो रास्ते से वो जाती थी, वो पाथ बिल्कुल भी अच्छी तरह से काटा नहीं था, वो जैसे के वैसे बड़े हुए आईवीज उसके ऊपर थे, कंप्लीटली निग्लेक्टेड पार्ट था, और वही पार्ट से वो हमेशा जाती थी। A few days after she had taken to Ben Weatherstaff, और जो जो कि मैंने अभी बताया, Ben Weatherstaff is the gardener, okay, working in the garden, kitchen garden. A few days after she had talked to Ben Weatherstaff, कुछ दिनों के बाद वो बेन वेदरस्टाफ से उसने बात की, जो कि माली था। She just paused to look at his part and wondered why the ivy there had not been trimmed. और
उनसे वो पूछती थी कि why the ivy had not been trimmed, क्यों काटे नहीं. As she paused to look up at the long spray of ivy swinging in the wind, she saw a gleam of scarlet and heard a brilliant chirp. तो वही रास्ते से वो जाती थी और उसने बेन स्टाफ वेज स्टाफ से कहा भी कि वाई शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग विथ हिम, वाई द पार्ट इज निग्लेक्टेड. एंड और वहां पे देखो, when she talked with Ben Weatherstaff, then there was a chirp there on the top of the wall perched Ben Weatherstaff's Robin. और वहां पे जो बेन वेदरस्टाफ से वो बात कर रही थी, ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, तो वॉल के टॉप पे perched, perched means sit, particularly this word we use for sitting the birds, sit on. Okay, sit on means perch by weather Ben Weatherstaff's Robin. बेन वेदरस्टाफ जो माली था, और उसको एक वहां पे जो रॉबिन एक बर्ड है, ओके रॉबिन, तो कोयल बर्ड, तो वो हमेशा वो बेन वेदरस्टाफ के आजू बाजू में वो कोयल का और बेन वेदरस्टाफ की जैसे कि दोस्ती थी, और वो हमेशा उसके आजू बाजू में रहता था. एंड रेड ब्रेस्ट, सो हाउ इट was tilting forward to the look and her with its small head tilted towards one side. So this is the description of the bird, that is बेन वेदरस्टॉप्स रॉबिन कैसा था, टिल्टिंग, रेड ब्रेस्ट उसकी थी, और वो वहां पे बेन वेदरस्टॉप के साथ रहता था. और वो बर्ड, वो जो रॉबिन है, वो उसको भी वहां पे हमेशा दिखाई देता था, उसको यानी ये मेरी को. ओह, शी क्राइड आउट, इट इज यू, इज इट यू. तो ये वर्ड्स जो है ये मेरी बोल रही है टू द this Robin को बोल रही है. And it did not seem at all queer to her that she spoke to him as if she were sure that he would understand and answer her. और वो ऐसे बात करती थी, ऐसे उससे बोल रही थी कि जैसे कि वो रॉबिन को उसकी लैंग्वेज समझ में आती है और वो उसको रिप्लाई करेगा, ये इंटेंशन से वो हमेशा वो रॉबिन से बात करती थी. It didn't answer, and eventually it was the bird. So, how can a bird answer? It didn't answer the wall as if speaking with her, and the robin just made some gestures. कुछ उसने अपने जो बॉडी मूवमेंट्स थे उससे वो जेस्चर करता था और बताता था कि ट्राइंग टू रिप्लाई, और वो उसके जेस्चर से मेरी भी समझ जाती थी कि व्हाट ही एक्चुअली सेइंग. It twittered, chirped, and hopped. Hopped means jumping like something, bird or animal, along the wall as if speaking with her. जैसे कि वो बात करता है इसलिए हॉपिंग वो कर रहा था. It seems to Mary as if she understood it too. और ऐसा लगता था कि उसके वो बॉडी लैंग्वेज से मेरी को भी वो समझ में आता है what he wanted to say. Although it was not speaking, we know that it cannot speak like we human, but the movement of that bird, Mary can, she could understand what he wanted to, or the bird wanted to, it wanted to say. mary began Mary began to laugh, and as the tiny bird hopped and looked little flights along the wall, she ran after him, and the bird began to and Mary began to laugh as she would look at the bird. तो बर्ड वो जो नॉटी उसके एक्सप्रेशंस थे, तो मेरी को भी बहुत पसंद थे और वो हंसती थी. टाइनी बर्ड हॉप्ड एंड took the flight along the wall, और वो वॉल के जो निगलेक्टेड वॉल थी उधर ही वो जाके बैठता था बहुत बार. And the bird was beckoning Mary also to come that part. And as she ran, the poor little thin Mary actually almost looked pretty for a moment. And as she was, I told you that she was ugly child. Okay, her mother, she was very beautiful, but she was not that much. बट ये जब रॉबिन के साथ वो खेलती थी, रॉबिन के साथ खेलते समय वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी दिखने लगी थी. नाउ
आई लाइक यू शी क्राइड आउट। और मेरी उसको बोलती है आई लाइक यू शी क्राइड आउट, पैटरिंग डाउन द वॉक। और उसके पीछे भागते हुए आई लाइक यू कहते। शी इवन चर्प्ड एंड ट्राइड टू विसल। और वो बर्ड के साथ चर्पिंग का भी ट्राई करती थी, विसल विसल करती थी। वी शी कुड नॉट डू वेल एट ऑल। अभी तक वो अभी कैसा, अभी तक वो तो करती ही नहीं थी, तो अब वो करने लगी और वो बर्ड के जैसा बिहेव भी करने लगी। However, the robin seems to be quite satisfied and chirped and whistle back at her। और वो बर्ड जो रॉबिन था वो भी उसको रिस्पॉन्ड करता था। जब वो चर्प करती थी तो ये भी बर्ड भी चर्प करता था। मानो कि ये दो ह्यूमन एंड एनिमल का इंटरेक्शन, जो बर्ड का इंटरेक्शन है, वो एक दूसरे को समझने लगे थे। एट लास्ट it spreads its wings and made a darting flight to the top of the tree where he perched and sang loudly। और वो आखिरी में उसको ले जाता था वही पाथ पे जहाँ पे आइवीज ग्रोन थे। और आखिरी में डार्टिंग फ्लाइट, डार्टिंग मीन्स स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी कि बहुत ही पावरफुल, फोर्सफुल, स्पीडीली। और वो स्पीडीली आखिरी में जाके वो वॉल के अदर साइड में जो ऑर्चिड था वहाँ पे, वो पेड़ के ऊपर वो जाके बैठता था और वहाँ से लाउडली वो सिंगिंग करता था। तो देखो, तो हमें एक बात समझनी है यहाँ पे कि ये बर्ड जो था वो रॉबिन, तो वो हमेशा मैरी को बेकॉन करता था कि चल, उधर लेके जाता था वही पार्ट में। और वो वॉल थी, वॉल के अदर साइड में गार्डन था, वो उसको बताना चाहता था, दिखाना चाहता था। और हमेशा वो गार्डन के अदर साइड के जो ट्री थी वहां पे वो जाके बैठता था। तो मेरी को लगता होगा कि वो अंदर के साइड कौन सा रास्ता है, वहां कैसे जाओ, अंदर का गार्डन कैसे है। She did not see even the garden ever before। she just would walk by the way। और हमेशा वो रास्ते से जाती थी, मगर उसको पता नहीं था कि that other side there is a secret garden। And it was, as I told you, it was completely neglected side of that garden that remained many of the first time she had seen him, when the robin was swinging on the tree top and she had been standing in the orchard। Yes। तो वही पेड़ पे मेरी ने पहली बार वो रॉबिन को देखा था। और वो रॉबिन भी हमेशा उसको वही लेके आता था और वो ऊपर जाके बैठता था। सो मानो कि उसको बताना था कि मेरी यहाँ पे गार्डन है। नाउ she saw in the other side of the orchard on a path outside the wall, much lower down, and there was the same tree inside। यस। तो एक साइड में वो खड़ी थी और अदर साइड में जो गार्डन था तो वहां पे वो जाके बैठता था। और वो दूसरी साइड अभी उसको समझ में आने लगी है। इट्स इन द गार्डन, नो वन कैन गो इनटू, शी सेड टू हरसेल्फ। और वो खुद को कहने लगी कि ये तो गार्डन के अंदर है एंड नो वन कैन गो देयर। इट इज द गार्डन विदाउट अ डोर। उसको समझ में आ गया कि दिस इज द गार्डन इनसाइड दैट विदाउट डोर, उसको दरवाजा ही नहीं है। He lives there। How I wish I could see what is it is like। And she wished that how can I go there to meet my Robin who sit inside the garden, but the garden, it doesn't have any door. So how can I go there? It was a question for Mary. That evening, then she came at home and see that evening she asked something about that garden। That evening at the dinner table, right, she asked Martha। तो उसने वो रात इवनिंग में उसने मार्था से पूछा, why did Mr. Craven lock the garden? Mr. Craven, he is the uncle, as I told you, मेरी के अंकल थे। तो उसने कहा कि अंकल ने, मिस्टर क्रेवन अंकल ने वो गार्डन लॉक क्यों किया है, व्हाट इज द सीक्रेट? Is it not to be talked about? Mr. Craven wouldn't like it। तो मेरी ने कहा कि मिस्टर क्रेवन ने कहा है कि इसके बारे में किसी को भी बताओ मत।
It was his wife's garden. Why? Because the garden, it was belongs to, it had specially made for his wife मिसेस क्रेवेन के लिए वो गार्डन आया था. You see, they used to work in it together. Together, both work together. Means Mr. Craven and Mrs. Craven, they would work together in that garden. It was special garden which was made by Mr. Craven for Mrs. Craven. But that's where it happened. One of the trees had a low branch, like a seat. Mrs. Craven had made roses grow around it. One day, while she was sitting on it, the branch broke. Mrs. Craven was very badly hurt, and she died the next day. और वो दोनों गार्डन में हमेशा काम करते थे. वहां पे एक ट्री था. देयर वॉज वन ऑफ द ट्रीज जिसकी एक लोअरिंग ब्रांच थी, झुके वाली जो ऐसी थी, वहां पे आराम से बैठा जा सकता था. तो मिसेस क्रेवन हमेशा वो गार्डन की ब्रांच पे बैठती थी. तो एक दिन क्या हो गया, सो वन डे वाइल शी वॉज सिटिंग ऑन इट, तो एक दिन वो ऐसे ही वहां पे बैठी थी. द ब्रांच ब्रोक, तो तभी क्या हो गया, जो टहनी वो टूट गई. एंड मिसेस क्रेवन, शी वॉज वेरी बैडली बम्प्ड एंड हर्ट. बहुत ही तरह से वो उनको दुखी हो गई, उनको मार लग गया उसका, और वो हर्ट हो गई. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, दैट एक्सीडेंट, शी डाइड नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन वो मर गई. दैट्स वाई मिस्टर क्रेवन लॉक्ड द गार्डन, रिप्लाइड मार्था. और मार्था ने कहा कि दिस इज द रीजन वाई द गार्डन हैज बीन लॉक्ड बाय मिस्टर क्रेवन. तो उन्होंने अपनी वो गार्डन में अपनी बीबी को खोया था. तो वो बहुत ही दुखी हो गए, और उसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो गार्डन को कंप्लीटली लॉक कर दिया, कभी खोलना नहीं चाहा, और किसी को वो गार्डन क्या. On hearing this, see, when Mary, she understood what was the incident behind this, the locking of this garden. Uh, on hearing this, Mary stayed at the fire and listened to the wind wuthering. For the first time in her life, she felt sorry for someone. पहली बार उसे दुख हुआ था उसके लाइफ में. उसके माँ बाप भी जब गुजर गए तो उसको दुख नहीं हुआ था, क्योंकि उसके माँ बाप उसको पसंद नहीं करते थे. उसको उतना दुख नहीं हुआ था. वो कुछ दिन तो घर में बंदी थी. अ, तो फिर कुछ ऑफिसर्स ने उसे उसे घर से बाहर निकाला था. मगर आज ये मिस्टर क्रेवन की स्टोरी सुनकर मेरी को दर्द हुआ, उसको दुख का एहसास हुआ. So when she hearing this, when on hearing this, Mary stayed at the red fire and listened to the wind wuthering. It's a wuthering. Wuthering represent here the sound, gale sound or wind sound, forceful wind sound. For the first time, and the first time in her life, she felt sorry for someone. और उसको पहली बार दुख हुआ, किसी के लिए एहसास हुआ उसको पहली बार. But as she was listened to the wind, she started hearing another sound, and as she was heard the wuthering sound of wind, again she heard a strange, unusual commotion. Martha, can you hear someone crying? So she asked Martha, the maid. uh, मेरी ने मार्था से पूछा कि मार्था, तुमने सुना कोई तो भी रो रहा है? इज इट अ चाइल्ड, कोई बच्चा है क्या? आस्क मैरी. Martha stood up suddenly and started to clear the table, or she started pretending that nothing is there. और वो मार्था को शायद कुछ तो भी पता था, मगर वो चुपचाप खड़ी रही, और उसने कुछ हुआ ही नहीं ऐसा एहसास दिखाते हुए चुपचाप से वो टेबल साफ करने लगी. नो मिस, देयर्स नो बडी. और उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे. इट्स जस्ट द विंड. आवाज आ रही क्राइंग, वो तो विंड की आवाज है. समटाइम्स इट साउंड्स लाइक एज इफ someone was lost on the moor and wailing. Yes, the moor I told you, it's a रेगिस्तान. Okay, barren land. और ऐसा ये barren land, जो barren land के बाजू में ये घर है, तो बहुत बार barren land से
हवा का आवाज आता है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई रो रहा है. दैट्स वाई इन द मूड. And wailing means expressing pain or grief. It's got all sort of sounds. And ये हमेशा इसी तरह से होता है. समझ में आता है कि कोई रो रहा है, but actually it is a sound of some wind, forceful wind. Again, but listen, said Mary. It's in the house, down one of those long corridors. Yes, the corridor, as I told you. And she said, yes, but listen properly. The sound, it is coming from, not from the moor. It is coming from the down of those long corridors. Long corridors, both sides, some rooms were there, and the path between the two rows of the house, the rooms. तो वहां से वो आवाज आ रहा है, वो बोलने लगी. And at that very moment, a door must have been opened somewhere downstairs, for a great rushing draught below along the passage, and the door of the room they sat, it was blown open. And suddenly, when she told us, the same thing happened. Suddenly the door of that their room opened and banged very loudly with a crush. As they both jumped to their feet, the light was blown out, and the crying sound was and swept down the far corridor, so that it was to be heard more plainly than ever. And when this incident happened, this is a dreadful incident. ये राइटर जो है हमें अभी डराने की ट्राई कर रही है कि ऐसा होता है. वो दो बातें कर रही है, वो गार्डन के बारे में, वो इंसिडेंट के बारे में. तभी वो कॉरिडोर से जोर की हवा आती है, दरवाजा खुलता है और जोर से दरवाजा बंद होता है, उनके रूम का भी दरवाजा खुल जाता है. और जो भी कैंडल्स थी, लाइट्स थे घर के अंदर के, वो एकदम से बंद हो जाती है. Someone spirit entered in their house as ghost came in. There, said Mary, I told you it is someone crying, and it isn't a grown-up person. Yes, कोई तो भी है, कोई तो भी बड़ा आदमी है और रो रहा है. Mary said. Martha ran and shut the door and turned the key. और मार्था ने दरवाजे की तरफ दौड़ी, जल्दी से उसने दरवाजा लगा दिया और की लगा दी. But before she did it, they both heard the sound of a door in some far passage, shutting with a bang, and then everything was quiet, for even the wind ceased wuthering for a few moments. And जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, मानो कि नीचे का भी या फिर कॉरिडोर को भी, मेन कॉरिडोर को भी दरवाजा बंद हो गया और हवा का आवाज भी बंद होने लगा. एज मार्था शी लैंच ऑफ द डोर, उसने जैसे ही अपने उनके रूम का दरवाजा बंद किया, की लगा दी, वैसे ही बाकी का भी आवाज बंद हो गया. और वो दोनों भी, अभी पूरी शांति वहां पे हो गई. It was wind, said Martha stubbornly or forcefully, confidently. Martha, she said, it was the wind. See, as I turn off the door, जैसे मैंने दरवाजा बंद किया तो पूरा शांति हो गई. तो दरवाजे की आवाज और विंड की आवाज थी. She was trying to convince to Mary that it was sound of nothing of any ghost or anything. It was just sound of the wind. And if it wasn't, it was little Betty Butterworth. So again, Betty Butterworth is the name of one scullery maid. Scullery maid. और उसने कहा कि अगर ये आवाज अगर हवा की नहीं होगी तो डेफिनेटली दैट वॉइस माइट बी बेटी बटरवर्थ. शी इज अ स्कलरी मेड. स्कलरी मेड यानी द मेड और द वुमन हु वॉश द स्पेशली यूटेंसिल्स, और जो बर्तन घसने का काम करती है वो लेडी. She's had the toothache all day, or and this scullery maid, Betty, she has the toothache. That's why she always shouts, cries. The sound might be the wailing might be of hers, not any others. But something troubled and awkward in her manner made Miss Mary stare very hard at her.
at her. And but though she tried to convince her, but something troubled, कुछ तो भी trouble उसको महसूस हुआ मेरी को. And Auckland means she also thought that something is indifferent is going on in her manner, made Miss Mary stare very hard at her means looking in a quick glance at her like this. बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उसने देखा कि she was trying to hide something from Mary. Martha, she was trying to hide something, the secret. She did not believe she was being told. And Mary, the child, the girl, she knew that Martha, she's trying to hide something from her. And here the lesson ends. So, dear students, in this lesson, we just try to understand one thing. As I told you, the characters, main characters in this story, there are three: Mary, the child, the girl, uh, who is who is spending her days at her uncle's house, and Martha, the maid. Weatherstaff, Ben Weatherstaff is the gardener. तो क्या होता है वो हमेशा वो घूमने के लिए बाहर जाती थी गार्डन, वो सीक्रेट गार्डन उसको पता नहीं था। तो रॉबिन हमेशा उसको बेकॉन करता था कि वही यहाँ पे गार्डन है जो किसी को पता नहीं, वो तुझे पता होना चाहिए। वो रॉबिन उसको बताना चाहता था। तो इवेंचुअली जब उसको वो गार्डन के बारे में समझ में आ गया तो एक इंसिडेंट उसके घर में हुआ, कॉरिडोर से आवाज़ आने लगी, और इट्स अ हॉरर सीन हैपन एट होम. And Martha actually, she might be known about all the things happening, but she doesn't want to express the things to Mary. और वो कुछ तो भी छुपा रही थी उससे, जो भी ये उसके घर में ये हो रहा था. So dear students, here we have completed the part which has been taken from the secret garden. Only two words are there, new words from this lesson: appropriately, in proper size. Uthering. Uthering means characterized by strong wind. It's a sound character. Character when wind, forceful wind blows. Some questions are there. See, these questions are very much important. I'll give you answers of these all questions. What did Mary do every morning? Yes, you can simply fast dress up and go outside for fresh air. You know, yes, this is the Robin leave according to Mary. So Mary, according to Mary, where did the Robin live? Robin, it would live in the secret garden at the top branch of the tree, where she had looked, or she had seen that bird one time, the first time. What was the strange voice that Mary heard? What was the strange voice that she heard? It was cry sound of someone. Someone is wailing or grieving or expressing grief by shouting like that, like that. How did Martha explain the strange noise to Mary? How she expressed? We know that she explained that it is nothing but the sound of that moor coming from that move and entering with forcefully through the door and corridor is just a sound, nothing else, she expressed. So I'll show you direct answer of these questions. So everybody, you simply can pause the video and you can jot down the answers. As I told you, yes, you can find all the descriptions, proper description of the questions here. You simply do one thing: pause the video, take screenshot, and you can prepare yourself. Better to, as I have been telling you one thing, don't copy the answers as it is. Okay, I'm giving this answer just for your reference to prepare yourself. You simply read it and frame your own answer. But please don't copy the answers, frame your own. This is just for your reference. Just go through the answers, read the answers, and prepare your own answer. The answer may be same like this, but that should be written by own. Don't copy answers as it is. Long answer questions. Answer the following questions in 80 to 100 words. Two questions were there, and both questions answer you can see here. So simply you just pause the video and take the screenshot.
So everybody, thank you very much for watching. Share if you like these videos, helpful to, if you find the videos helpful, share with your friends and like it. Still, if you find any difficulty, you comment it. If you didn't understand any word, just write the word in comment. I'll give you the answer of your questions. Even I'll give the meaning of the word. So we have completed here the lesson, which has been taken from The Secret Garden, The Corridor. Thank you very much.